सो गाइस, लास्ट वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं. पेंटोन वैलेटाइन ल्यूकोसाइडिन, हम लोग टॉक्सिन्स पढ़ रहे थे. हीमोलाइसिन पढ़ लिया था. अब पेंटोन वैलेटाइन ल्यूकोसाइडिन PVL. इट इज़ composed of two components, S slow, F fast. These components damage polymorphonuclear leukocytes and macrophages. The toxins has been increasingly associated with community-acquired MRSA strains. Then enterotoxin. The toxin is responsible for staphylococcal food poisoning. 9. ABC1, C2, C3, D, E, H, and I. A, B, C, D, E, H, I. Okay, antigenically. Distinct enterotoxins have been identified. Type A toxin is responsible for most of the cases. The enterotoxin is resistant to gut enzymes. It also resists boiling for 30 minutes, a temperature that kills Staphylococcus aureus. Then toxic shock syndrome toxin. TSST. TSST producing strains belongs to bacteriophage group 1. TSST type 1 is most often responsible. TSST1 toxin producing strain colonize vagina more frequently. Exfoliative epidermolytic toxin. Two types of exfoliatic toxin, A and B, has been described. Now enzymes. Staphylococcus aureus produces a number of enzymes, coagulase, phosphatase, and deoxyribonuclease, which are related to virulence of the bacteria. Aureus produces an enzyme coagulase. There are 8 A to H antigenic type of coagulase. Most human strain produce coagulase type A. It has property to clot human or rabbit plasma. Coagulase is secreted free into culture medium. It is heat labile. It requires a plasma factor, coagulase reacting factor, for its clotting action. Coagulase reacting factor is present in rabbit and human plasma. Coagulase converts fibrinogen into fibrin. Now, clumping factor, also called bound coagulase, is heat stable constituent of cell wall which react directly with fibrinogen and causes clumping of cocci due to precipitation of fibrin on cell surface. The test coagulase is done by slide and the tube method. It is done to differentiate pathogenic strain from non-pathogenic strains. Okay, now slide coagulase test. Slide coagulase test detects bound coagulase. If few colonies of bacteria are emulsified in a drop of normal saline on a clean glass slide and mixed with a drop of undiluted rabbit or human plasma, prompt clumping of suspension occurs with coagulase positive strains. Then tube coagulase test. Tube coagulase test is done for detection of extracellular free coagulase. 0.1 ml of an overnight growth culture or an agar culture suspension of the organism is mixed with 0.5 ml of 1 in 5 dilution of human or rabbit plasma. Diluted plasma alone in a second tube serve as a control. The tubes are incubated in a water bath at 37 degrees Celsius for 3 to 6 hours. In case of positive test, the plasma clots and does not flow when the tube is inverted. False positive, citrated plasma should not be used because some contaminated Pseudomonas bacteria may utilize the citrate and produce false positive reaction. Now we study about pathogenesis. Staphylococcus aureus is an important pyogenic organism and lesions are localized in nature in contrast to streptococcal lesions, which are spreading in nature. Coagulase enhance virulence of Staphylococcus aureus by inhibiting phagocytosis. It forms a wall of fibrin clot around the lesion. Thick creamy pus is formed in staphylococcal infection. Staphylococcal disease may be classified as cutaneous and deep infections, food poisoning, nosocomial infections, skin exfoliative disease, and toxic shock syndrome. Now, first is cutaneous infections. Superficial infections include pustules, boils, carbuncles, abscesses types, impetigo, neonatrum, wound and burn infections. Then फिर deep infections कुछ जैसे टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, साइनसाइटिस. फिर फूड पॉइजनिंग में स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग में फॉलो 2 to 6 hours after the ingestion of contaminated food which contains preformed enterotoxin of Staphylococcus aureus. Nosocomial infection, they are important cause of hospital acquired infections. Skin exfoliative diseases, these diseases are produced by the strain of Staphylococcus aureus that produce exfoliative toxin. Stripping of superficial layer of skin from the underlying tissue occurs in various exfoliative syndrome caused by Staphylococci, bullous impetigo, pemphigus, neonatrum, Ritter's disease. Staphylococcus scalded skin syndrome is one example of exfoliative disease in which toxins spread systematically but not exclusively in small children. Then fear toxic shock syndrome caused by toxic shock syndrome toxin and are characterized by high fever, hypotension, vomiting, diarrhea and sclerotinoform rash. TSS became widely known in association with the use of tampons by menstruating women, but it occurs in other situations also. Then we study about lab diagnosis. And in lab diagnosis, first is a specimen. These are collected according to the nature of lesion as follows.
पस, सेपरेटिव लीजन्स, स्प्यूटम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, ब्लड सेप्टिसीमिया और PUO में, यूरिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, CSF मेनिंजाइटिस ब्रेन की कोई इन्फेक्शन में, फीसिस फूड पॉइजनिंग में, फूड और वॉमिट फूड पॉइजनिंग में, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट. Then specimen should be collected in sterile containers under all aseptic conditions. In case of urine, midstream urine should be collected. Blood should be collected in blood culture bottles comprising of glucose broth and torracolate broth. Specimens should be transported immediately to laboratory and processed. Direct microscopy with gram strain smears of pus or wound exudate is useful where gram-positive cocaine cluster may be seen, like in figure 19.4. This is of the no value for specimen where mixed bacteria flora are normally प्रेजेंट. एग्जाम्पल स्प्यूटम, इसमें हम लोग पस सेल्स देख रहे हैं, उसके बीच में स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है. कल्चर, देन फिर कल्चर में द स्पेसिमेन आर इनोक्यूलेटेड ऑन द फॉलोइंग मीडिया. ब्लड अकार, पेप्टोन वाटर. स्पेसिमेन वेयर स्टेफाइलोकोकाई आर एक्सपेक्टेड टू बी स्कैंटी और आउटनंबर्ड बाय अदर बैक्टीरिया. एग्जाम्पल फीसिस आर इनोक्यूलेटेड ऑन सेलेक्टिव मीडिया. द इनोक्यूलेटेड मीडिया आर incubated at 37 degree for 18 to 24 hours. Next day, culture plates are examined for morphology of bacterial colonies and other characters. Uniform turbidity is produced in liquid medium such as peptone water. Gram staining from colony on blood acar and hanging drop preparation from peptone water are done to further characterize the bacteria. Then कल्चर के बाद कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड ग्राम स्टेनिंग में ऑन ब्लड आकार कॉलोनीज आर 2 to 4 mm इन डायमीटर, सर्कुलर रेज ओपेक जो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, एंड प्रोड्यूस गोल्डन येलो पिगमेंट. बीटा हिमोलाइसिस इज सीन अराउंड द कॉलोनीज. द पिगमेंट इज नॉट डिफ्यूजिबल इनटू द मीडियम. तो ऐसा कुछ दिखेगा ऑन ब्लड अगार. ऑन ग्राम स्टेनिंग दे आर ग्राम पॉजिटिव अरेंज्ड इन ग्रेप लाइक क्लस्टर. नॉन मोटाइल कोकाइन क्लस्टर आर सीन इन हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशंस. देन फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस में कैटालेज टेस्ट एंड कोएगुलेज टेस्ट. कैटालेज टेस्ट ऑल स्टेफाइलोकोकाई आर कैटालेज पॉजिटिव. दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश स्टेफाइलोकोकस फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस विच इज कैटालेज नेगेटिव. और कोएगुलेज टेस्ट में पॉजिटिव है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बट नेगेटिव इन अदर स्टेफाइलोकोकाई. दिस टेस्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल ऑन पे. ठीक है, ये हो गया था पहले ही. अदर टेस्ट हमने पहले पढ़ा है, कोएगुलेज टेस्ट. फिर अदर टेस्ट विच आर पॉजिटिव इन पैथोजेनिक स्ट्रेन एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकाई आर डिस्क्राइब. जैसे मैनिटोल फर्मेंटेशन, एसिड प्रोडक्शन विदाउट गैस, जिलेटिन लिक्विफेक्शन पॉजिटिव है, टेल्यूराइड रिडक्शन पॉजिटिव है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस ये दोनों पॉजिटिव हैं. फिर आता है कि बैक्टीरियोफेज टाइपिंग में डन फॉर एपिडियोमोलॉजिकल पर्पसेज टू ट्रेस द सोर्स ऑफ ऑरियस इन्फेक्शन. एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टोक्स method or Kirby-Buer method. Treatment में benzyl penicillin is most effective antibiotic in sensitive strain. Cloxacillin are used against beta-lactamase producing strain. Vancomycin is used in treatment of infection with MRSA strain. Some resistance to vancomycin and teicoplanin have appeared in hospitals. For mild superficial lesions, topical applications of bacitrine or chlorhexidine may be sufficient. अब नेक्स्ट वीडियो में कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई हम लोग रीड करेंगे.